Hello everyone, welcome to our channel and wish you all a very happy new year. In this video we will learn how to create holiday masters and import holiday master in Spine HRMS. So first of all you have to log in with your URL credentials. The credentials and the URL should be your company's credential. वो Google Chrome में आप mention कीजिए and log in it to the system. यूजर आईडी जो भी आपका सुपर एडमिन है वो आप मेंशन कीजिए एंड क्लिक ऑन लॉगिन टैब. Go to the main dashboard. As you can see, this is the main dashboard. On the left hand side you can see all the modules over here: admin, self-service, leave and time module. For holiday creation we have to go to the time module. यहाँ पे define के अंडर में holiday masters option है. Go to the holiday masters options. You can see all the previous holiday calendars over here and you can choose the holiday list from this drop down as well. To create a new holiday calendar we have to click on the add new button. Click on this add new button. यहाँ पे you can mention your calendar name, for example calendar 2025. Now if you have multiple calendars state wise, then you can create calendar name state wise as well, and then select the dates from the drop down. So first of all, for example 1st of January 2025, and name your holiday here new year. Now you can choose the holiday type as well from the drop down. If it is mandatory then you can choose mandatory, else optional. So both the options are available here. Then click on save button. You can see a new holiday calendar and the new holiday has been created here. For more holiday calendars or holiday names you can click on add new once again. सेम हॉलिडे कैलेंडर के अंदर मुझे वापस से दूसरा हॉलिडे क्रिएट करना है, देन अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन द ऐड न्यू बटन. चूज द कैलेंडर फ्रॉम द ड्रॉप डाउन जो अभी रिसेंटली हमने क्रिएट किया है. स्टेट वाइज आप क्रिएट करेंगे तो स्टेट वाइज आपको इस तरह से ड्रॉप डाउन में विजिबल हो जाएगा. यू कैन चूज योर हॉलिडे कैलेंडर नेम, click on the date, choose the dates as well. Another date or another holiday calendar will be on 26. Name your holiday Republic Day, again mandatory or optional. Then click on save. Right, so this is the process of creating the holiday calendar single. Now if you want to create it in bulk through the Excel option, we have import option also. Here in utility section you can choose holidays import option. This will show you the file selection option. यहाँ पे आप फाइल अपलोड कर सकते हैं, and before that you need to create a Excel file which you can create in CSV or TXT format as well, and fields can be choose from these lists. Now choose the field name from the calendar name जो मैंने आपको दिखा देता हूँ. ऑलरेडी आई हैव क्रिएटेड वन फॉर्मेट हियर, कैलेंडर नेम, डेट, हॉलिडे नेम एंड हॉलिडे टाइप. सभी का फॉर्मेट दिया हुआ है. डेट का फॉर्मेट शुड बी mm यानी कि मंथ पहले, देन डेट एंड देन ईयर. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. आई हैव टू क्रिएट कैलेंडर 2025, डेट 26 जनवरी. So as I earlier mentioned that month should be first, 01/26/2025. Then holiday name Republic Day. Holiday type mandatory. Correct. सेम वे में आपके और भी हॉलीडेज हैं तो वो भी आप एक लिस्ट में मेंशन कीजिए एंड save it to the CSV or Excel. CSV means comma delimited CSV. Name your file. Yes. Now you can choose the holiday calendar from this selection file option. Choose holiday list. Click on open. Now click on upload. This will upload your file. Now you have to click on import option to check the holiday list. You can see one record out of one has been uploaded here. अभी अगर आपको ये क्रॉस चेक करना है, click on back.
select your holiday calendar here. Now you can see मैंने एक मैनुअल क्रिएट किया था जनवरी 1st, 2nd 26 ऑफ जनवरी 2025, जो बल्क अपलोड किया है हमने, सिस्टम ने वो क्रिएट करके आपको दे दिया. सो दिस विल अलाउ यू टू क्रिएट द हॉलिडे मास्टर्स. ऑलराइट, नाउ हॉलिडे मास्टर क्रिएशन आपका कंप्लीट है. ये हॉलिडे मास्टर क्रिएट करने के बाद आपको हॉलिडे कैलेंडर असाइन भी करना होता है एम्प्लॉयज़ को. इट इज़ नॉट जस्ट कि मैंने क्रिएट कर दिया तो वो असाइन भी हो जाएगा. टू असाइन दी हॉलिडे मास्टर्स वी हैव टू गो टू दी एडमिन सेक्शन. एडमिन सेक्शन में यूज़र मैनेजमेंट में आपको मैनेज यूज़र प्रोफाइल करके एक ऑप्शन दिखेगा. क्लिक ऑन मैनेज यूज़र प्रोफाइल ऑप्शन, and if you want to assign this holiday calendar to all the employees in a bulk option, just click on OK. You need not to select the employees or the filtrations over there. Just click on the OK button, scroll it right. You can see your holiday calendar list here. If you want to assign holiday calendar 2025 to all the employees, just select the holiday calendar. As you can see, सभी employees को ये assign हो चुका है in a single click. Now you can save it. Record will be saved successfully and this will be assigned. So holiday calendar assigned, holiday creation in single and bulk mode, we have all learned here. And thank you very much for your time.